स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के निकनेम के, सधर्म के सत्कर्म के, ऊंची झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय। हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रख खंबीर हो। अति शुद्ध हो आचार में, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पर भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे। गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे कम रहे। Good afternoon, everyone. Myself, Ishita Agarwal. My team would be presenting the topic related party transactions. Firstly, I would like to invite our keynote speaker, Sri Hitesh Malu, for providing his inputs regarding the same. हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। एंड आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी कंपनी हर सॉर्ट ऑफ के ट्रांजेक्शन करती है, बट जब बात रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की आती है, इट ऑलवेज बिकम a high focus area for government, for regulator, for auditor, for financiers, for lenders, for shareholders, for every stakeholder. Related party transaction is always a high focus area. उसका क्या रीजन है? उसका रीजन लाई करता है इस चीज में कि एक कंपनी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरिंग है वो कैसा है। एक कंपनी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरिंग है वो कुछ ऐसा होता है कि इसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब जो उसके साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। उसके शेयर होल्डर हो सकते हैं, उसके केएमपीज हो सकते हैं, उसके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, उसके वेंडर्स हो सकते हैं, उसके लैंडर्स हो सकते हैं, उसके ऑडिटर्स हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट हो सकती है, रेगुलेटर हो सकता है, या फिर ऐसे पर्सन जो उसके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। और इन सब स्टेक होल्डर के अपने अपने सेपरेट एम्बेडेड इंटरेस्ट है, अपने अपने सेपरेट इंटरेस्ट है। जो एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, जो एक अच्छा कॉर्पोरेट लॉ होता है, दैट इज सपोज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर। एंड ऐसे में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हाई फोकस एरिया बन जाता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज स्केप्टिसिस्ट टू फ्रॉड और अनड्यू बायस और अनड्यू बेनिफिट। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, राइट? यू आर द वन हु इन्फ्यूज द मनी, यू आर द ओनर ऑफ ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। अगर आपको किसी से कुछ भी माल परचेज करना है या किसी को कुछ भी चीज सेल आउट करनी है, चाहे वो गुड्स हो, मटेरियल, सर्विसेज हो या फिक्स्ड असेट हो, आप अगर किसी रिलेटेड पार्टी को सेल आउट करते हैं, किसी रिलेटेड पार्टी से परचेज करते हैं, तो क्या इस डिसीजन से आपको खुद को कोई ऑब्जेक्शन होगा क्या? नो, इट्स योर डिसीजन इटसेल्फ, तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अभी इसको थोड़ा बढ़ाते, जब आपका बिजनेस बड़ा हुआ,
आपने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया, मान के चलिए आप लोग 4 पार्टनर, उसमें से आपको कुछ चीज सेल आउट करनी है। फॉर एग्जांपल आपको अपने जो आपका एंटरप्राइज है उसके अंदर कुछ फर्नीचर या कुछ एयर कंडीशनर उसको सेल आउट करना है, एंड वो जो इन्फ्यूजन है मनी का वो 4 पार्टनर का अपना अपना इन्फ्यूजन है, सबने बराबर बराबर पैसे लगा रखे, एवरीवन इज इक्वल शेयर। अब मान लीजिए कोई एक पार्टनर आकर बोलता है कि ये जो फर्नीचर एसी है ना वो तो हम हमारे किसी रिलेटिव को सेल आउट कर देते हैं, क्या बाकी 3 पार्टनर को पॉसिबली ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या? हो सकता है। रीजन क्योंकि उनका खुद का भी तो मनी इन्वॉल्व है। हो सकता है वो प्राइमा फेसी मना नहीं करे, बट कम से कम वो फेयर मार्केट वैल्यू जरूर देखेंगे। जो ट्रांजेक्शन वो प्रपोज कर रहा है उसका क्या प्रोसीजर है, आर्म्स लेंथ प्राइस पर है कि है नहीं है, वो सब चीज वो रिव्यू करना चाहेंगे। फिर बहुत इजी चीज है, कोई लॉ रेगुलेशन का अपन बात ही नहीं कर रहे, अपन बेसिक इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं या बेसिक बिजनेस स्ट्रेटेजीज का बात कर रहे हैं। उसको अगर हम किसी कंपनी के लेवल पर जाकर देखें ना तो चीजें थोड़ी और इंटेंस हो जाती है। इंटेंस क्यों हो जाती है? यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही पार्टनर का शेयर था ना, जो अलग अलग बैकग्राउंड से थे। एक कंपनी के केस में, स्पेशली पब्लिक कंपनी के केस में और स्पेशली एक लिस्टेड कंपनी के केस में सोचो कितने लोगों का शेयर इन्वॉल्व होता है। तो इंटेंस चीजें इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है, और दूसरा एक कॉर्पोरेट इकोनॉमी का ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है। किसी भी कंट्री का अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो उस कंट्री के खुद के जो इन्वेस्टर्स है, उस कंट्री के बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उनका एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो सकता है कि हाँ इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इंडिया का ड्रीम है कि हमको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है या एक स्पेसिफिक ट्रिलियन के आगे हमको हमारी इकोनॉमी लेके जाना, उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रॉन्ग होना बस बहुत जरूरी है। एंड ऐसे में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हर तरीके के रेगुलेटर का, लॉ मेकर का और ऑडिटर का हमेशा हाई फोकस एरिया रहता है। ओनली फॉर द रीजन क्योंकि यहाँ पर अनड्यू बायस होने की पॉसिबिलिटी होती है। क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किसी भी कंपनी में प्रोहिबिटेड होते हैं? ना, दे आर जस्ट रेगुलेटेड। रेगुलेटेड इन अ वे कि वो एक फेयर ट्रांजेक्शन हो और जिनका स्टेक इन्वॉल्व है उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले अप्रूव या डिसअप्रूव करने की, विद ऑल द ट्रांसपेरेंसी एंड विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंडिया में जो रिलेटेड पार्टी कंपनी 2 अलग अलग लॉ के अंदर रेगुलेटेड होते हैं। पहला होता है कंपनीज एक्ट 2013 जिसके अंदर वेरियस सेक्शंस है जो अलग अलग ट्रांजेक्शन के साथ में अलग अलग डेप्थ पे डील करते हैं। और एक है सेबी एक्ट जहां पर सेबी रेगुलेशन एलओडीआर डील करते रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ। सेबी एलओडीआर के अंदर जो रेगुलेशन है कुछ पैचेस में बन रखी है। तो रेगुलेशन 17 से लेकर 17 से लेकर 27 ये जो रेगुलेशन है ये बात करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन्हीं रेगुलेशन के बीच में आता है रेगुलेशन 23 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में वो डिस्कस करता है। वो ये बताता है कि कब कब जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो ऑडिट कमिटी, और कब कब ऐसा सीन आएगा जब ऑडिट कमिटी के साथ साथ ईजीएम बुलाकर या एजीएम बुलाकर शेयर होल्डर का भी अप्रूवल चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा वो बात करता है कि क्या क्या रिलेटेड पार्टी होती है, किस किस को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहा जाएगा, कौन कौन इसके एम्बियट से बाहर है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा लॉ जो डील करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ में वो करता है कंपनीज एक्ट 2013। As you people know, there are certain sections in Companies Act 2013, especially Section 133, accounting standards, and Ind AS 133 accounting standard AS 18 लगता है related party में, talks about disclosure requirement. Ind AS 24 again talks about disclosure requirement. You people must be aware कि किसके ऊपर Ind AS applicable है, किसके ऊपर accounting standard applicable है. Apart from that, Section 143 responsibility of auditor talks about the standard on auditing. SA 550 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ऑडिटर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, SA 550 में गिवन है, जिसका कंप्लायंस सेक्शन 143 में मैंडेटरी कर रखा है। इसके अलावा जो सीधे इन्वॉल्व रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी, अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो वहां पर हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑडिट कमिटी अप्रूव करेगा। You people know कहाँ का ऑडिट कमिटी लगता है? एवरी लिस्टेड कंपनी बाय डिफॉल्ट ऑडिट कमिटी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी ऑडिट कमिटी रहेगा ही रहेगा, नो इफ एंड बट। पब्लिक कंपनी
लास्ट बैलेंस शीट जो ऑडिटेड है उसको उठाकर देख लो कि 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, 10 करोड़ के ऊपर पैड कैपिटल है, या 50 करोड़ के ऊपर इनके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, चाहे वो लोन्स हो, डिबेंचर हो, डिपॉजिट हो। ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट है। एंड ऑडिट कमेटी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक चंक उठाकर ऑडिट कमेटी में डाल दिया जाता है। हाउ इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि जनरली सारे डे टू डे डिसीजन लेता है, इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट कमेटी? इट इज डिफरेंट इन द वे कि ऑडिट कमेटी में जो डायरेक्टर बैठते हैं ना, उसमें कम से कम 2/3 ऑफ द डायरेक्टर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। व्हाट अबाउट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज? मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अगर आप कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करोगे तो ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट है उस कमेटी में, वो लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो वहां पर शेयर होल्डर्स का, जिसका मनी लगा हुआ है, उनका ट्रस्ट बढ़ता है। वहां पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लोन दिया उस कंपनी को, उनका ट्रस्ट बढ़ता है। तो ये रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 184 टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर एंड पार्टिसिपेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एवरी डिसीजन जो ऑडिट कमेटी के पास जाएगा, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिव्यू करते हैं उसको कि हम डिसीजन ले या नहीं ले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द इंसेप्शन पॉइंट फॉर एवरी डिसीजन। अगर कोई डायरेक्टर खुद इन्वॉल्व है तो ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। वेरी गुड नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है, आप सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, लीज पे दे रहे हो, या आपने किसी रिलेटिव को अपॉइंट किया एंड एक अच्छे अमाउंट के ऊपर, 10% ऑफ द टर्नओवर के ऊपर, या 5% ऑफ द नेटवर्क के ऊपर, या 2.5 लाख पर मंथ के ऊपर आप किसी को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, ऐसे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के लिए, तो हम बकायदा एक ईजीएम बुलाकर, खर्चा होता है ईजीएम बुलाने में, बट ईजीएम बुलाकर सारे शेयर होल्डर को बुलाते हैं और उनकी अप्रूवल के बाद वो ट्रांजेक्शन हम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्शन 185 है जो कि प्रोहिबिट करता है कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी। प्रोहिबिट, नॉट रेगुलेटेड, प्रोहिबिट ही कर रहा है। नो कंपनी विल गिव लोन टू डायरेक्टर, या डायरेक्टर के रिलेटिव को लोन नहीं देगी, या डायरेक्टर के पार्टनर को लोन नहीं देगी, या किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म को लोन नहीं देगी जिसमें मेरा डायरेक्टर है, उसका रिलेटिव पार्टनर। कंप्लीट प्रोहिबिशन। हाँ, वो कंपनी किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है जहां पर मेरा डायरेक्टर कॉमन है, बट शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, और वो भी ऑर्डिनरी अप्रूवल है, स्पेशल रेजोल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्शन 73 डिपॉजिट बताता है किस किस से ले सकते, किस किस से नहीं ले सकते। इट अलाउस कि डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से आप डिपॉजिट ले सकते, जो कि डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। प्रोमोटर से आप डिपॉजिट ले सकते हो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 192 है, विच टॉक्स अबाउट कि आप एक कंपनी किसी डायरेक्टर या उसके रिलेटेड पार्टी के साथ में नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, मतलब बार्टर ट्रांजेक्शन होगा, या फिर विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजेक्शन हो रही नहीं कर सकता, और करना है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए। आफ्टर ऑल पैसा तो उनका ही लग रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, शेड्यूल 3 में कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आती है, which is very important because you people know कि most of the decision in a company by an investor is taken on the basis of the financial statement audited by a chartered accountant. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन मेकिंग के लिए या उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। All sort of related party transactions are disclosed in financial statement through AS 18 if AS is applicable, through Ind AS 24 if Ind AS is applicable. Apart from that, there are specific additional regulatory requirement of disclosure. If there is a loan given to a KMP or related party, or a director or a promoter, you need to separately disclose. If those loan is given without stipulating any terms of repayment, and you have to also show that that particular loan given to related party is how much it constitute, how much proportion of the total loan given by the company. This needs to be disclosed. If any trade receivable is outstanding, any loans and advance is given, or any security deposit advanced and is appearing in the financial statement, you need to separately disclose by way of footnote ki how much money pertains to related party. So this disclosure requirement also helps. And इतना तो हमको समझ में आ गया है कि इंपॉर्टेंस तो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करने की भी
और उनका फेयर प्रेजेंटेशन होने के भी। व्हाट अबाउट नॉन कंप्लायंस ऑफ इट? हैवी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉन कंप्लायंस में आपने एग्जीक्यूट कर दिया, यू विल सी ऑनवर्ड्स की वहां पर वॉइडेबल माना जाता है एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। जो डायरेक्टर या ऑफिसर इन्वॉल्व है, he will indemnify the company in case of any loss. Not only that, section 188 this talks about कि आपको इन ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूट करने पर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। अगर उसका नॉन कंप्लायंस किया, the concerned director is disqualified to become director under section 164. तो अब इन हर रेगुलेशन के बारे में जो अभी थोड़ा सा मैंने जिस्ट दिया है, ये तीनों अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे, तो फोकस करना। ये एज एन ऑडिटर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंटिल यू पीपल भी नोइंग कि क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने अलग अलग लॉ से, अलग अलग सेक्शन से जो जो रेलेवेंट चीजें रिलेटेड पार्टी में, उन सबको चुन के फिल्टर करके प्रॉपर सीक्वेंस में जमा कर आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाइए। फोकस ऑन इट, स्टार्ट। Thank you, sir, for your valuable inputs. Firstly, I would apologize for my mistake. I missed out giving Hitesh such intro. So firstly, I'll do that and then we'll start with the PPT. CA Hitesh Malu is a qualified chartered accountant with over 5 years of experience in audits and taxation. He completed his articleship from TR Chadda and Company, Mumbai, and thereafter associated with Kalani and Company since 2016 and looking after various audits, including corporate statutory audits, tax audits, internal audit, trust audit, and RERA audits. He has good experience of auditing real estate entities and educational institutions. He also deals in matters related to ITR filing, real estate GST, corporate law, trust taxation, and other matters requiring application of accounting standards, standards on auditing, labor law, and real estate laws, and has also been involved in matters relating to filing of replies of various taxation and TDS matters. Furthermore, he also handles assignments of managing finance and accounts, project implementation, project monitoring, business operations, and fund management. In January 2024, he has also been promoted as partner in Kalani and Company. So now let's start with the presentation. The presentation is further divided into 5 frameworks, which are as follows: provisions under Companies Act 2013, SA 550, SEBI LODR Regulations 2015, related party transactions under AS 18 as well as under AS 24. I'll be covering the portion of provisions under Companies Act 2013. First, let us know what is a related party transaction. This term is defined under Section 188, which says that it refers to a deal or arrangement made between two parties who are joined by a pre-existing business relationship or common interest. For example, any sale, purchase, or supply of any goods or materials, leasing of property of any kind, availing or rendering of any services, selling or otherwise disposing of or buying property of any kind. There are many more examples, but let's move to the another slide, which talks about why related party transactions are required to be regulated. This is so to avoid conflict of interest in decision making and to ensure that transactions with related parties are on same terms as in case of unrelated parties. It also ensures transparency and disclosures of related party transactions. Now, as we can see the two terms on screen, related party and relative. These seems to be a quite similar term, but in actual they differ from each other. So let's know each of them individually. What is related party? Related party is defined under Section 2, Clause 76 of Companies Act 2017 in reference to a company, which says that any individual is a related party if he is director, KMP, or relative of such person. Further, if a firm will also be a related party if any director or manager of that company is a partner in that firm. In private company in which a director or manager or his relative is a member or director. For public company, if any director or manager is a director or along with his relatives holds more than 2% of the paid up share capital of such company.
Further, related party also includes any body corporate whose board, managing director or manager is accustomed to act in accordance with the advice, directions or instructions of a director or manager. Also, any individual except in professional capacity on whose advice, direction, instructions or a director is accustomed to act. Private company, a holding company, subsidiary company, or an associate company of such company is also a related party for that company. A subsidiary company of a holding company to which it is also a subsidiary company, that is, it is a fellow subsidiary, so that will also be a related party. Any investing company or the venturer of the company. Any individual who is a director other than independent director or KMP of the holding company or his relative with reference to a company will also be treated as related party. Now let's see the other term, relative. back करना फिर से इसमें जो सेकंड कॉलम है इंडिविजुअल वाला एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर और मैनेजर इज कस्टम टू एक्ट ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में दे रखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है हु इज कस्टम टू एक्ट द डायरेक्शन ऑफ someone that someone becomes a related party. इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 2 क्लोज 69 भी है कंपनीज एक्ट का which defines promoter. उन्होंने बता रखा है कि 3 लोग होते हैं promoter. The last one speaks about this. Okay. तो फिर time it gets covered in fund. Relative is defined under section 2 subsection 77 of Companies Act 2017 which says relative with reference to any person means anyone who is related to another in the following manner. That is a members of a HUF, spouse, father or mother including stepfather, stepmother, son including stepson, son's wife, daughter and daughter's husband, brother and sister including stepbrother and stepsister. Now, for making any related party transaction happen, it needs to take some approvals. Section 177, clause 4 and subclause 4 talks about that audit committee's approval is required for all related party transactions. Further, section 188 talks about prior board approval, and section 188 along with rule 15 talks about prior shareholders approval. The sections or provisions which talk about the related party transactions are as follows. Rule 2, 1C, section 177 read along with rule 6A, section 185, section 188 along with rule 15 and section 192. Let's see each of the sections individually. First, rule 21C. Rule 21C talks about deposit. What is deposit? Deposit includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a company, but does not include. There are many sub-clauses, but we'll talk about only 2 clauses which are related to related party transactions. Clause 8 says any amount received from a person who at the time of receipt of amount was a director of the company or a relative of the director of private company, provided that if the director furnishes at the time of giving loan in declaration that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposits from others, and the company shall also disclose the same in the board's report. Clause 13 talks about any amount brought in by the promoters of the company by way of unsecured loan in pursuance of the stipulation of any lending financial institution or a bank subject to fulfillment of following conditions. Namely, there are 3 conditions. First condition talks about the loan is brought in pursuance of the stipulation imposed by the lending institutions on the promoters to contribute such finance. Second point, the loan is provided by the promoters themselves or by their relatives or by both. Third, the exemption under this subclause shall be available only till the loans of financial institutions or banks are repaid and not thereafter. This was all about rule 2. Further, moving to the next section, we will talk about section 177. Companies Act के अंदर a company is not allowed to take money from any person until and unless specified by some clauses. कहने का मतलब है कि कुछ 15-16 क्लोजेस है, सिर्फ उन्हीं क्लोजेस में जो तरीकों के बारे में लिखा हुआ है एक कंपनी मनी एक्सेप्ट कर सकती है. अगर कोई 16 क्लोजेस में कवर्ड नहीं है तो a company cannot accept money otherwise than those mentioned in 16 or 15 clauses.
उनमें से दो क्लोजेस आते हैं, क्लोज 8 एंड क्लोज 30। क्लोज 8 टॉक्स अबाउट कि अगर कोई डायरेक्टर है एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ मनी, जिस पर्सन से आप मनी रिसीव कर रहे हो, अगर वो डायरेक्टर है उस टाइम पर, देन इट इज अलाउड। या फिर आप डायरेक्टर के रिलेटिव से भी एक्सेप्ट कर सकते हो इन केस ऑफ कंपनीज। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आप डायरेक्टर के रिलेटिव से भी मनी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? बट वो भी इतना इजी नहीं है। जब भी वो मनी डायरेक्टर उस कंपनी को दे रहा है, ही विल डिक्लेयर कि दैट मनी गिवन बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी इज फ्रॉम हिज ओन नेटवर्क एंड नॉट फ्रॉम एनी बोरोड फंड। तो डायरेक्टर को तो यहाँ पर कवर करके आप उनसे मनी एक्सेप्ट कर सकते हो, इज अलाउड। बट व्हाट अबाउट प्रोमोटर्स? सी, a promoter is necessarily not designated to be a director, right? Promoter is someone else, director is someone else. Who is promoter? जिसको आपने MGT 7 में लिस्ट कर रखा है, एनुअल रिटर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट जिसके इंस्ट्रक्शन पर BOD is accustomed to act, वो प्रोमोटर हो गया। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्रोमोटर रिलेटेड पार्टी तो है, बट प्रोमोटर इज नॉट ए डायरेक्टर। तो अगर आपको किसी प्रोमोटर से मनी रिसीव करना है, इज नॉट अलाउड, क्योंकि पहला वाला जो क्लोज है वो सिर्फ डायरेक्टर का ही है। तो व्हाट अबाउट प्रोमोटर? ओनली एक सिनेरियो जहां पर आप प्रोमोटर से मनी ले सकते हो, वो सिनेरियो है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग लेता है, सिक्योर्ड लोन लिया फॉर एग्जांपल, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना जिसने लोन दिया है, वो काफी सारी कंडीशंस रखता है कि मेरे को ये मॉर्गेज चाहिए, मेरा सिक्योर्ड लोन है, आप इस तरीके से रिपेमेंट करेंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और ये इंस्टॉलमेंट रहेगा, अगर आप डिफॉल्ट कर गए, डिले कर गए तो ये चार्जेस रहेंगे। देयर आर मेनी कंडीशंस। उसमें से एक कंडीशन ये भी रहती है कि हम जितना आपको लोन दे रहे हैं, वो टाइम टू टाइम वर्किंग कैपिटल के लिए भी जो प्रोमोटर है उनको भी कुछ ना कुछ पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी पूरा का पूरा बिजनेस है हमारे लोन पे ही कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उतना हाई है जितना उस कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो कंपनी डूब जाएगा। तो कहीं और से भी उनको फंड का रिक्वायरमेंट रहेगा, स्पेशली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि हो सकता है कि जो लोन हो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म असेट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी? तो उसके लिए वो स्टिपुलेट करते हैं, कंडीशंस रखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि प्रोमोटर को भी बोलो कि वो भी पैसा इन्फ्यूज करे। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो क्लोज 13 में कवर हो जाता है। तब प्रमोटर कैन इन्फ्यूज द मनी इन कंपनी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट। Further, moving towards next slide, we can see section 177, clause 4 and subclause 4. It says that every audit committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the board, which shall include approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties, provided that the audit committee may make omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the company, subject to such conditions as prescribed in Rule 6A. We will see Rule 6A in next slide, but let's continue with that slide. This slide first. In case of transaction, other than transaction, refer Let's start with this slide again. Section 177, clause 4, subclause 4 talks about every audit committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the board, which shall include approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties, provided that the audit committee may make omnibus approval for related party transaction proposed to be entered into by the company, subject to such conditions as prescribed in Rule 6A. In case of transaction other than transactions referred to in section 188,
and where audit committee does not approve the transaction, it shall make its recommendations to the board. In case any transaction involving any amount not exceeding rupees 1 crore is entered into by director or officer of the company without obtaining audit committee's approval and is also not ratified within 3 months from the date of transaction, then such transaction shall be voidable at the option of audit committee, and if the transaction is with related party to any director or is authorized by any other director, then the director concerned shall indemnify the company against any loss incurred by it. The provisions of this section shall not apply to, but it excludes transactions referred to in section 188 and says that between wholly owned subsidiary company and holding company. Now let's see what Rule 6A talks about. Rule 6A says that the audit committee shall, after obtaining approval of the board of directors, specify the criteria for making omnibus approval. The criteria shall include the following 5 points. First point, maximum value of the transactions in aggregate which can be allowed under the omnibus route in a year. Second point, transactions which cannot be subject to the omnibus approval by audit committee. Third point, maximum value per transaction which can be allowed. Fourth point, extent and manner of disclosures to be made to audit committee at the time of seeking approval. Fifth point, review at such intervals as the audit committee may deem fit related party transactions entered into by the company pursuant to each of the approval made. Rule 6A also talks about some factors for making omnibus approval happen. These factors are the given 4. Omnibus approval shall be valid for a period not exceeding 1 financial year and shall require fresh approval after the expiry of such financial year. बेसिकली ओमनिबस अप्रूवल स्टार्टिंग में फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में लिया जाता है रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए, जो कि ईयरली होने वाली है बार बार, ताकि आपको बार बार अप्रूवल ना लेना पड़े. और ये ओमनिबस अप्रूवल आपको ईयरली हर रिलेटेड पार्टी के लिए मतलब इट इज वैलिड ओनली फॉर 1 year and after that you have to take it again. Second point, it talks about repetitiveness of the transactions in past or in future. Third, justifications for the need of omnibus approval. Fourth, the audit committee shall satisfy itself for transactions of repetitive nature and that the company. Rule 6A asks for some conditions that are 2. First, omnibus approval shall not be made for transactions Omnibus approval shall not be made for transactions in respect of selling or disposing of the undertaking of the company. Second, omnibus approval shall specify name of the related party, nature and duration of transaction, maximum amount of transaction that can be entered into, indicative base price or current contracted price, and the formula for variation in the price. Last point says other relevant information for audit committee to take a decision on the proposed transaction. This was all about section 177 को काफी ब्रॉडली इसको कवर किया है. अगर मैं इसका एक सिंपल जिस्ट दूं, एक तो आप लोगों को पता है व्हाट इज ऑमनिबस अप्रूवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑमनिबस टू पीपल नो, ब्लैंकेट अप्रूवल, वन टाइम अप्रूवल. सेक्शन 177 इज ऑल अबाउट ऑडिट कमिटी. तो जहां ऑडिट कमिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां ऑडिट कमिटी है ही नहीं, वहां पर ये सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल. तो पहली बात तो ये सेक्शन वहां लगता है जहां पर ऑडिट कमिटी होती है. एंड पीपल नाउ नो कि कहां का ऑडिट कमिटी का एप्लीकेबिलिटी आता है. एंड ऑडिट कमिटी के अंदर कौन कौन मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 3 मेंबर होते हैं. एंड यू नो कि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं. ऑडिट कमिटी में कोई भी ऑडिट कमिटी के बहुत सारे काम होते हैं. सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूव करना उनका काम नहीं होता. वो लोग इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्ट होते हैं उसको रिव्यू करते हैं. वो लोग जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है उसको भी प्रपोज करते हैं, उसको भी रिकमेंडेशन करते हैं. इसके अलावा बहुत सारे इनसाइडर ट्रेडिंग वाली जो चीजें होती है ऑडिट कमिटी देखते हैं केस ऑफ लिस्टेड कंपनी. तो उसमें से वन ऑफ द टास्क ऑफ ऑडिट कमिटी इज टू रिव्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. व्हाई ऑडिट कमिटी इज अपॉइंटेड फॉर दिस? क्योंकि ऑडिट कमिटी में जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट है. दे कैन विदाउट बायस रिव्यू अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. इसलिए ऑडिट कमिटी को इस चीज के लिए डेजिग्नेट किया गया कि आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिव्यू करनी है. अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन से वाले?
जब ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में स्लाइड आई थी जहां पर कुछ ट्रांजेक्शन के नाम थे, सेल एंड परचेज, लीजिंग, ये सब ट्रांजेक्शन सेक्शन 188(1) के अंदर मेंशन है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन है, इनके केस में ऑडिट कमेटी का अप्रूवल कैसे लगता है, अब अदर देन दोस ट्रांजेक्शन ऑडिट कमेटी का अप्रूवल कैसे लगता है, वहां पर अलग अलग प्रोविजन आते हैं जिसने पूरा अच्छे तरीके से कवर किया है। अगर वो ट्रांजेक्शन 188(1) में मेंशन है, टोटल 7 ट्रांजेक्शन आगे फिर से आएंगे, राइट, वो ट्रांजेक्शन आगे फिर से आएंगे, टोटल 7 ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन उन 7 ट्रांजेक्शन में से एक है, तो पहले भी था एक स्लाइड थी पर आगे भी कवर करेंगे, तो ऑडिट कमेटी का मैंडेटरी अप्रूवल उसको चाहिए ही चाहिए। अगर वो उन 7 ट्रांजेक्शन में से नहीं है, कोई और ट्रांजेक्शन है रिलेटेड पार्टी के साथ में, बट कोई और ट्रांजेक्शन है, तो फिर ऑडिट कमेटी उसको अप्रूव करेगा। बट अगर वो किसी भी वजह से उसको डिसअप्रूव करता है, तो ट्रांजेक्शन रुकेगा नहीं, बस ऑडिट कमेटी अपना एक रिकमेंडेशन देगा जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोजर जाएगा, बट वो ट्रांजेक्शन फिर भी हो सकता है। बट उसमें एक एक्सेप्शन है, देयर इज वन ट्रांजेक्शन तो तब भी नहीं होगा, और वो है कि अगर किसी डायरेक्टर के साथ में ट्रांजेक्शन है विच इज बिलो 1 करोड़, तब तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए चाहिए। विदाउट दैट अगर वो ट्रांजेक्शन हो गया, तो फिर उसको विद इन 3 मंथ या तो उसको रेटिफाई करवाएगा ऑडिट कमेटी के थ्रू, बाद में अप्रूवल ले ले, अगर नहीं ले पाता है तो फिर वो ट्रांजेक्शन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी एंड द कंसर्न डायरेक्टर और ऑफिसर विल इंडेमनिफाई द कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा एक्सेप्शन इतना जरूर है कि अगर आपका किसी हॉलीवुड सब्सिडियरी के साथ ट्रांजेक्शन है और वो ट्रांजेक्शन 188(1) वाला नहीं है, ऑडिट कमेटी का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। बट हॉलीवुड सब्सिडियरी के साथ ट्रांजेक्शन है वो 188(1) वाला, जो 7 ट्रांजेक्शन आगे पढ़ेंगे, तब ऑडिट कमेटी का अप्रूवल उस टाइम लगेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑमनीबस अप्रूवल का जो प्रोविजन है, उसके आने के पीछे का लॉजिक ये है कि जब कोई कंपनी किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करती है, तो जरूरी नहीं को वन टाइम ट्रांजेक्शन, वो एक रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन हो सकता है, वो ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो सकता है, और वो ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो सकता है। तो ऑडिट कमेटी के लिए प्रोविजन ये है कि अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि कोई ट्रांजेक्शन फेयर इनफ है, वो रिव्यू कर चुकी है ऑलरेडी, और वो बार बार वही ट्रांजेक्शन हुआ, तो बार बार रिव्यू करने में वो टाइम ना वेस्ट करे, एफर्ट ना वेस्ट करे, तो एक वन टाइम अप्रूवल का भी सिस्टम है, ब्लैंकेट अप्रूवल। इसका सिस्टम कैसे वर्क करता है? पहला स्टेप रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है कि हमारे कंपनी में ऑमनीबस अप्रूवल का सिस्टम चलेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया कि हाँ यहाँ पर ब्लैंकेट अप्रूवल, वन टाइम अप्रूवल का भी सिस्टम चलेगा, तो उसके बाद में ऑडिट कमेटी स्पेसिफाई करती है कि हम ब्लैंकेट अप्रूवल, वन टाइम अप्रूवल किस किस को देंगे। तो बता दें कि ये अमाउंट के अगर ट्रांजेक्शन होंगे जो इस लिमिट के अंदर रहेंगे, तो वन टाइम अप्रूवल के लिए एलिजिबल होंगे। ट्रांजेक्शन का नेचर ये होगा, हमारे पास जब वो ट्रांजेक्शन आएगा तो हमको ये डिस्क्लोजर चाहिए। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ऑडिट कमेटी स्पेसिफाई करता है ये सब, तभी हम ऑमनीबस अप्रूवल का कॉन्सेप्ट अलाउ करेंगे। अगर वो ये स्पेसिफाई कर देती है, फिर आगे कोई डायरेक्टर या बीओडी ट्रांजेक्शन लेकर आते हैं कि आपकी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में बैठना है, क्या आपको ऑमनीबस अप्रूवल मिल जाएगा, दैट टाइम ऑडिट कमेटी विल कंसीडर कि ऑमनीबस अप्रूवल देना है कि नहीं देना। ऑमनीबस अप्रूवल 5 साल 6 साल के लिए नहीं जा सकता, सिर्फ वन फाइनेंशियल ईयर खत्म, उस ट्रांजेक्शन को फिर से एग्जीक्यूट करना ऑमनीबस अप्रूवल में, फिर से ऑमनीबस अप्रूवल। इजी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ऑडिट कमेटी के बारे में हमने पढ़ा कि वो किन किन ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने की ताकत रखती है, विच इज लगभग सारे ट्रांजेक्शन। तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे बीआर भी चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए, और फिर हम आगे पढ़ेंगे ऑडिट रेजोल्यूशन भी चाहिए, तो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने एक ही अप्रूवल पढ़ी, ऑडिट कमेटी की चाहिए। So this was all about section 177 and rule 6A. Further moving to the next section, that is section 185, about which Hitesh sir has also talked about. It says about loan to directors. Section 185 prohibits companies from giving any loans, providing guarantees, or providing security in connection with a loan to its director or any other person in whom the director is interested. Exceptions to this are loans given by a company to its managing or full-time directors subject to certain conditions. Second, loans given by companies in the ordinary course of their business. Third,
loan given by a holding company to its wholly owned subsidiary company. Basically, these 3 points are not only about loans, but it also talks about guarantees or providing security in connection with a loan. Fourth point says any guarantee given or security provided by a holding company in respect of loan made by any bank or financial institution to its subsidiary company. Non-compliance with the provisions of Section 185 will result in heavy penalties for the company as well as the directors involved. The penalty is such that any director who so found in default will get up to imprisonment of 6 months, and fine would be 5 lakhs, which may extend up to 25 lakhs. And for the company, the fine would be same 5 lakhs to 25 lakhs. Now, in this section, we have heard a term, any other person in whom the director is interested. Let's see this. It involves 4 points. First says any director of the lending company or of a company which is its holding company or any partner or relative of any such director. Second, any firm or company in which the director or his relative are partners, directors, or members. Third, any other entity in which the director, his or her relative, have a significant interest or influence. Fourth, any body corporate, the board of directors, managing director, or manager whereof is accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the board or of any director or directors of the lending company. This was all about a brief point of section 185. Let's move to another section. एक बार बैक करना, इसके अंदर एक और बैक करना, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं 2017 में अमेंडमेंट आए थे इसके अंदर, जहां पर थोड़ा रीसीक्वेंसिंग करा गया सेक्शन 185. सेक्शन 185 टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स: लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद सिक्योरिटी डिपॉजिट, दैट इज समथिंग एल्स. मैं सिक्योरिटी का कौन सा बात कर रहा हूँ? अगर मैं अपना कोई प्रॉपर्टी किसी के लोन पे गिरवी दे रहा हूँ, मॉर्गेज दे रहा हूँ, वो वाला सिक्योरिटी, कोलेटरल. तो अगर कोई भी कंपनी किसी को भी लोन देती है, किसी को भी गारंटी देती है, गारंटी किस बात की दी? क्योंकि उसने लोन लिया, मैंने उसको लोन नहीं दिया, उसने कहीं और से लोन लिया, पर उसके लोन पर मैं गारंटी दे रहा हूँ या फिर उसके लोन पर मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ. अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो सेक्शन 185 ट्रिगर होता है. सेक्शन 185 के अंदर मेजरली 4 सब सेक्शन है, इसमें से 2 185(1), 185(2) इज इम्पोर्टेंट. 185(1) ये कहता है कि जो 185(1) में कवर्ड है पर्सन, आप उनको ना तो लोन दे सकते हो, कंप्लीट प्रोहिबिशन. ना उन्होंने अगर किसी से लोन लिया है तो कंपनी उस पर गारंटी देगी, और ना ही अगर उस कंपनी ने उसने अगर कोई लोन लिया है तो आप उस पर सिक्योरिटी दोगे. कौन कौन लोग हैं? वो कंपनी का खुद का डायरेक्टर, उस डायरेक्टर के रिलेटिव्स मतलब उसके जो इंडिविजुअल रिलेशन के अंदर लोग आते हैं, मदर, फादर, डॉटर, सन, डॉटर्स हस्बैंड, सन्स वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, ये सब. तो ना तो डायरेक्टर को आप लोन, गारंटी या सिक्योरिटी दोगे, ना ही आप अपने डायरेक्टर के रिलेटिव या पार्टनर को भी लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दोगे, और ना ही आप ऐसी किसी फर्म को लोन, गारंटी या सिक्योरिटी दोगे जिसमें आपका पार्टनर, सॉरी आपका डायरेक्टर या उसका रिलेटिव उधर पार्टनर. दैट इज 185 सबसेक्शन 1. कंप्लीट प्रोहिबिशन, नो इफ नो बट. सेक्शन 185(2), वहां पर कुछ लोगों के उन्होंने नाम दे रखे जो कि जनरली बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं. उन बॉडी कॉर्पोरेट को अगर आप लोन, गारंटी या सिक्योरिटी देते हो तो इट इज अलाउड सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन. पहला कंडीशन, स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ेगा. जितने भी शेयर होल्डर है सबका मीटिंग बुलाओ, रेजोल्यूशन प्रपोज करो कि हम इसको लोन देना चाहते हैं. अगर 75% प्लस का अप्रूवल आता है तो ही वो आप लोन दे सकते हो या गारंटी दे सकते हो या उसके लोन पर सिक्योरिटी दे सकते हो. और दूसरा कंडीशन, ये डिक्लेरेशन कि सामने वाला जो यूज करेगा उस लोन को, मैं तो लोन दे रहा हूँ ना उसको, या फिर वो कहीं और से लोन ले रहा है जिसमें मैं गारंटी सिक्योरिटी दे रहा हूँ, वो अपने खुद के बिजनेस पर्पज के लिए यूज करे. दोनों चीजें चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन और ये एश्योरेंस, तब जाकर मैं उनको लोन, गारंटी या सिक्योरिटी दे सकता हूँ. 185(3) कुछ एक्सेप्शन का बात करता है, जहां पर अगर आप किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन दे रहे हो किसी स्कीम के अंडर, तो आप सारे के सारे एम्प्लॉइज को दे रहे हो. मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय. अगर आप सारे एम्प्लॉय को लोन दे रहे हो और उसी स्कीम के परसुएंट मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन दे रहे हो, देन इट इज फाइन.
या फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन दे रहे हो एक ऐसी स्कीम बनाकर जिसको शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव किया है, देन ऑल्सो इट इज 185 सबसेक्शन 4 जो पेनल्टीज एंड पनिशमेंट इसने बताए हैं वो सब ट्रिगर हो जाएंगे, हैवी कॉन्सिक्वेंसेस। अंडरस्टूड? We are done with section 185. Moving forward, let's see what section 188 talks about. No company shall enter into any contract or arrangement with a related party with respect to, these are the 7 clauses which Hitesh sir has also talked about, sale, purchase or supply of any goods or materials, selling or otherwise disposing of or buying property of any kind, leasing of property of any kind, availing or rendering of any services, appointment of any agent for purchase or sale of goods, materials, services, or property. Such related parties' appointment to any office or place of profit in the company, its subsidiary company or associate company, and underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof of the company. Unless first approval of BOD is obtained by way of passing a resolution at board meeting, and second conditions prescribed in Rule 15 are complied with. Basically आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विद एनी ऑफ द रिलेटेड पार्टी अनलेस सेक्शन रूल 15 की कंडीशन जो प्रिस्क्राइब है आपने उसके साथ में कंप्लाई किया है एंड यू हैव टेकन बोर्ड्स अप्रूवल बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग. Here we have seen a term office or place of profit. Let's know what it is. Office or place of profit. Basically या तो कोई भी डायरेक्टर है उसको ओवर एंड अबव रेम्यूनरेशन के ऊपर कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो सैलरी हो, फी हो, कमीशन हो, परक्विजिट्स हो, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट फॉर हिम. अदरवाइज अगर कोई भी इसके अलावा अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, मीन्स अदर देन डायरेक्टर, अगर उसको कोई भी ओवर एंड अबव रेम्यूनरेशन मिल रहा है और डायरेक्टर अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो फिर वो भी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा. Moving forward, let's see first provision to section 188(1) read with rule 15. It says about approval from members. In case of companies crossing the limits prescribed below with respect to RPT, the contract or arrangement shall be entered into only with the prior approval of the member. नीचे जो लिमिट्स है अगर उससे वो लिमिट्स को क्रॉस करता है तो आप तभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर सकते हो अगर आप मेंबर्स का अप्रूवल लेते हो. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज sale, purchase, or supply of any goods or service materials directly or through appointment of agent. The threshold limit for approval is amounting to less than 10% of the turnover of the company. Second point, selling or otherwise disposing of or buying property of any kind directly or through appointment of agent. Threshold limit for this is same as above. Leasing of property of any kind. Threshold limit for this is also same, that is amounting to less than 10% of the turnover of the company. Availing or rendering of any services directly or through appointment of agent, threshold limit is same for this time. Fifth point, related parties appointment to any office or place of profit in the company, its subsidiary company or associate company. Threshold limit is monthly remuneration less than 2.5 lakhs per month. Remuneration
Okay, so these are the few notes regarding these are the few notes regarding above points. First, threshold limits for transactions shall apply either individually or taken together during a financial year. Second, the turnover which we have referred above shall be computed on the basis of audited financial statement of the preceding financial year. Third, in case of WOS, that is wholly owned subsidiary, the resolution passed by the holding company shall be sufficient for the purpose of entering into the transaction between WOS and holding company. Moving further, second provision to section 188(1) talks about members ineligible to vote. First, no member of the company shall vote on such resolution to approve any contract or arrangement which may be entered into by the company if this member is a related party. Second, related party has to be construed with reference only to the contract or arrangement for which the resolution is being passed. Third, related party in the above context refers only to such related party as may be a related party in the context of the contract or arrangement for which the resolution is being passed. Moving on to next slide, there are certain exceptions to both these provisions. The common exceptions to both these are: first, government company in respect of contract or arrangement entered into by it with any other government company or central government or state government or any combination thereof. Second point, government company other than a listed company in respect of contracts or arrangements other than purchase or supply of any good or materials in case such company obtains approval of the Department of Central Government, which is administratively in charge of the company, or as the case may be, the state government before entering into such contract or arrangement. These two exceptions were common to first provision, second provision. Now, exception to first provision is there also transactions entered into between a holding company and its wholly owned subsidiary company whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval. Exceptions to second provision are company in which 90% or more members in number are relatives of promoters or are related parties. Second, private company and specified IFSC public company. Moving forward, now we are done with section 188. Only non-applicability is left. Let's see how much you have understood. It's a basic question. You have to say either yes or no. Whether section 188 covers the following transactions: allotment of shares to relative of KMP. Anyone of you would like to answer? KMP रिलेटिव होता है इतना तो पता है नहीं. अब वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो 7 पॉइंट है ना 188 के अंदर उसको कवर है कि नहीं, यस और नो तो बोलना. So the answer to it is no. Second, licensing of a brand to one of the subsidiaries. Yes, the answer to it is yes. Third, corporate guarantee for a loan taken by an associate. No for this. वो 7 ट्रांजैक्शन में कॉर्पोरेट गारंटी किधर था? तो 185 में था ना. Fourth, appointment of CFO and deciding the remuneration. इसमें दोनों के अलग-अलग आंसर्स होंगे. For appointment of CFO and for deciding the remuneration. Appointment of CFO is a no and deciding the remuneration is yes. Receipt of reimbursement of expenses on actual basis from a subsidiary. Anyone? It's a no, guys. Moving on, let's see what is non-applicability of section 188. Section 188(1) shall not apply to any transactions entered into by the company
in its ordinary course of business other than transactions which are not on an arm's length basis. Ordinary course of business would include transactions which are entered into in the normal course of business pursuant to or for promoting or in furtherance of the company's business objectives. Arm's length transactions means a transaction between two parties that is conducted as if they were unrelated so that there is no conflict of interest. In this, no conflict of interest means to prove that existence of special relationship between contracted parties has not affected transaction and its critical terms, including price, quantity, and quality, and other terms and conditions governing the transaction by following industry and benchmarks past transactions entered by the company. So this was all about section 188, and I am done with my part. Now we'll have a quiz, and after that, Lakshya will continue. बैक कर लो उसको, जो 7 ट्रांजैक्शन है ना, वो फिनिश करो ना उसको। ठीक है, तो 7 ट्रांजैक्शन थे ना, तो यहाँ पर अगेन वो 7 ट्रांजैक्शन है, 4 इधर है, 3 नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, अभी आगे एक लिमिट लिख रखा है। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर समरी बताऊं इंटायर सेक्शन 188 का, तो वो इतना सा है कि अगर ये 7 ट्रांजैक्शन में से कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ में हो रहा है और वो इस लिमिट के बिलो है, तो सिर्फ 2 लोगों का अप्रूवल चाहिए, एक तो ऑडिट कमेटी का और एक बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड मीटिंग में पास होना चाहिए वो रेजोल्यूशन, बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकता वो रेजोल्यूशन पास। ये एक्सेप्शनल कंडीशन है पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर। बहुत चुनिंदा जगह कंपनीज एक्ट में चीज मेंशन है कि आप ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन है ये आप कैसे पास कर सकते हो, बाय सर्कुलर भी पास कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करा के वहां भी पास कर सकते हो, या स्पेसिफिकली लिखा है कि बोर्ड मीटिंग में ही वो बीआर पास होगा। तो अगर ये ट्रांजैक्शन इस लिमिट के बिलो है तो इस ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ 2 लोगों का अप्रूवल, बट अगर इस लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं 3 लोगों का अप्रूवल। ऑडिट कमेटी रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। पहले ऐसा हुआ करता था, अमेंडमेंट के थ्रू उसको बोआर बना है, तो जनरल मीटिंग और शेयर होल्डर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इसमें रिक्वायरमेंट है। इजी। हाँ, ये सब आपको पता है कि अगर खुद शेयर होल्डर इंटरेस्टेड उस ट्रांजेक्शन में, कैन ही वोट? नो। अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड उस ट्रांजेक्शन में, तो क्या बोर्ड मीटिंग में कैन ही वोट? फॉरगेट वोट, वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, 184(1) भी कवर किया आगे। ठीक है, अपन एक छोटा सा सेक्शन और समझ लेते हैं, सेक्शन 184। तो पहले इसको कंप्लीट करते फिर उस पे आते हैं। अगर ठीक है, ऐसे भी तो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो साथ में कवर ही ना हो बट रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहे हैं। किसका अप्रूवल? ठीक है, ओनली कमेटी। हाँ ठीक है यार, की समझ आ रहा है ना? ट्रांजेक्शन इन सातों में है ही नहीं और रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहा है, ओनली ऑडिट कमेटी का हो रहा है। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो मजे करो, किसी का करनी चाहिए। वैसे तो हर डिसीजन के लिए बोर्ड मीटिंग में एक बीआर पास करना इज अ वेरी गुड हैबिट, इज अ वेरी गुड सेक्रेटरी प्रैक्टिस, होना चाहिए, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इन 7 ट्रांजेक्शन में बट लिमिट के बिलो है, ओनली 2 लोगों का अप्रूवल, ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड रेजोल्यूशन। लिमिट के ऊपर है, तीनों का अप्रूवल, ओआर भी चाहिए। बट लिमिट के ऊपर है, सातों ट्रांजेक्शन भी है, एक कंडीशन है ऑडिट कमेटी के अप्रूवल से काम हो जाएगा। एक नहीं 2 कंडीशन है, साथ में फुलफिल होनी चाहिए। आर्म्स लेंथ प्राइस पर ट्रांजेक्शन होना चाहिए एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अगर ये दोनों फुलफिल हो रहे क्राइटेरिया, तो इस लिमिट को बाईपास करने के बाद भी आपको शेयर होल्डर का भी अप्रूवल नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। इजी। एक 184(1) और पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन। इसमें ऐसा है कि अगर मान लो बोर्ड मीटिंग हो रही है
कोई भी, तो एक डायरेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बोर्ड मीटिंग में, तो समझना है ऐसा। कोई भी डायरेक्टर किसी कंपनी में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बना, अब उसके डायरेक्टर बनते ही मान लो कोई बोर्ड मीटिंग हो रही है, उसको रिक्वायरमेंट है कि वो MVP1 नोटिस वहां पर देगा। व्हाट इज MVP1? MVP1 एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो ये बताता है, डायरेक्टर ये बताता है कि मैं कहाँ कहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ, किस किस LLP में मैं पार्टनर हूँ, किस किस पार्टनरशिप फॉर्म में मैं पार्टनर। आप में से तो कोई नहीं कर रहा ना यहाँ, तो बाहर का ही कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा जन म्यूट कर सकता है। पता नहीं क्या क्या हो सकता है आज। एक चीज जो आ रहा है जहां पर उसका एमपीपीएन देना पड़ेगा, कोई भी अमेंडमेंट आता है उसकी कंसर्न की इंटरेस्ट में चेंज हो गया, कहीं प्लस हो गया कहीं माइनस हो गया, उसके बाद जैसे कोई बोर्ड मीटिंग हो रहा है अगर उसका एमपीपीएन देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी प्रपोज कर रही है किसी ऐसी रिलेटेड पार्टी के साथ में जहाँ डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो वो जो बोर्ड मीटिंग होने वाला है ना, उस बोर्ड मीटिंग होने से पहले भी उसको डिस्क्लोजर देना है, एक MVP1 देना है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, एंड वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अंडरस्टूड? दो चीजें करेगा। 184(1) टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉन पार्टिसिपेशन इन दैट मीटिंग, जहां पर उसका इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो प्रपोज हो जा रहा है। अमेंडमेंट के थ्रू प्राइवेट कंपनीज में एक एग्जेम्पशन दे रखा है कि यू कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। प्राइवेट कंपनीज वहां के कोरम का इशू रहता है, पता चले दो ही डायरेक्टर, अगर आप एक आउट कर दे क्या मीटिंग करेगा, तो उस कॉरम के इशू को चेक करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एग्जेम्पशन है कि अगर डायरेक्टर अपना डिस्क्लोजर दे देता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। इजी। इशू द नेक्स्ट, क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किस पर यहाँ पे आर्ट को सबके लिए आता है, यहाँ प्रेजेंट है बाहर है, सबको सकते हैं।
Now let's continue with the remaining portion of Companies Act 2013. So first is the Section 192, which is regarding the restriction on non-cash transaction involving directors. So first it states that no company shall enter into an arrangement where now there are two conditions. That first one is that director of the company or its holding company or subsidiary or associate or any other person connected to the director acquires or is to acquire assets other than consideration for cash from the company. Second one is opposite to this condition, whereby company is acquiring or is to acquire the asset for consideration other than cash from the director or any person connected to him. And this transaction they cannot do unless there is approval by the resolution in the general meeting. The second point states that the notice of the meeting shall include the particulars of the arrangement along with the value of assets involved in such arrangement. That was the asset or transfer of asset without consideration of cash. Uh, and this valuation of asset must be done by a registered valuer. The third case is any arrangement in contravention of such provisions shall be voidable at the instance of the company. Now there are two cases where the company cannot make the void the arrangement. The first one is where the consideration other than cash is no longer possible, and but the company has been indemnified by any other person. But and the second and the person who was doing the contravention of the provision was not aware that he was doing contravention of provision, that is he has done in innocence. Then is the contravention of the provisions of section 192. Of course, I also told if a person contravenes the provision, he'll be liable for some consequences. So let's study them. If in case the company is the listed company, he'll be liable for imprisonment that can extend up to 1 year, or with a fine that can be 25,000 to 5 lakh rupees, or with both. But in case the company is not listed, then he shall only be liable for the fine, which can be 25,000 to 5 lakh rupees. Then are the conditions and explanation prescribed under Rule 50. में क्लैरिटी आया सबको? अगर कोई भी कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ में एक ट्रांजैक्शन कर रही है, ट्रांजैक्शन कौन सा है? जो एसेट है ना, एसेट या तो वो उससे परचेज कर रही है या उसको सेल आउट कर रही है. एसेट या तो परचेज कर रही है, सेल आउट कर रही है. अगर वो ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन? नॉन कैश ट्रांजैक्शन का यहाँ पर ये मतलब है कि या तो बार्टर ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर विदाउट एनी कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन हो रहा है. तो वो ट्रांजैक्शन तभी पॉसिबल है जब शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाकर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए. और जो शेयर होल्डर को मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस भेजा जाएगा, उसके अंदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन भी भेजा जाएगा. क्योंकि पैसा किसका लग रखा है, एसेट किसका है? शेयर होल्डर्स का. दे आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी. अगर उनका रजामंदी होगा, इफ दे अप्रूव इट, तो फिर ठीक है. बट ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि एनी एसेट व्हिच गेट्स ट्रांसफर्ड बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स रिलेटेड पार्टी, और कोई डायरेक्टर का रिलेटिव है, तो शेयर होल्डर को नोटिस भेजा जाएगा जहां पर कहा जाएगा कि ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, यू आर इनवाइटेड टू वोट और टू अप्रूव इट. एंड ये रजिस्टर्ड वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन आपके एसेट का. इफ शेयर होल्डर अप्रूव्स इट एंड इट इज फाइन. इफ दे डिसअप्रूव इट, तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है. फिर वो ट्रांजैक्शन अगर डायरेक्टर ने कर दिया तो वो वॉइडेबल होगा ट्रांजैक्शन, and the director will indemnify the company along with the penalty just told. Cool. Now let's study Rule 15, which states that a company shall enter into a contract or arrangement with related parties subject to the following conditions. There are three conditions. First one is the agenda of the board meeting shall contain the following information. The particulars are name of the related party, nature of relationship, the nature, duration of the contract, and other particulars, the material terms of the contract, including the value, any advance paid or received, and the manner of determining the price and other commercial terms. All the factors that were relevant to the contract that have been considered, and those factors that haven't been considered, the reason for not considering them, and any other information that the people think that is relevant for taking the decision by the board. The second condition to Rule 15 states that
where any director is interested in any contract or arrangement that is taking place, he shall not be present at the meeting during discussion on the subject matter of that resolution, as already told by sir. And the third part says that the explanatory statement should be annexed to the notice of general meeting, and the statement should carry the following particulars, which are name of the related party, name of director of KNP who is related, nature of relationship, and the particulars of the contract, and any other information they think so that is important for taking decision by members. Then is the section 184, subsection 2, which uh, it says that every director who is in any way directly or indirectly concerned or interested in the contract which we have entered into or proposed to be entered into uh, shall disclose the nature of his concern or interest at the meeting of the board. Now the director can be related in two senses. First is first is we are entering contact with the body corporate in which a director और such director in association with any other director. मतलब कोई director individually या फिर दो तीन director of the reporting entity मिलके holds more than 2% of the shareholding of the body corporate, or director can be the promoter or manager of or CEO of the body corporate. And in case the entity we are taking transaction into is not a body corporate, it is a firm or any other entity, such that is a partner, owner, or member of that entity. Then, the second part of section 184 subsection 2 describes if any director or was not concerned or interested at the time of entering into the contract, but later on he becomes interested or concerned with the contract, then he shall disclose his concern or interest at a later stage. But he can disclose it at that time only, or after entering into the concern or interest. But at the first board meeting held, then let's move on to the second major part of our today's class, which is SA 550. So, what does related party mean as per SA 550? As per SA 550, related party is any party as defined under applicable FRF. For example, if Companies Act is applicable, then as per section 276, as already told by Ishita, for a recap, it includes director or his relative, KMP or his relative, firm where director, manager, or relative is a partner, private company where director, manager is a member or director. But where the FRF does not prescribe any relationship with the related party, or it prescribes but it is very minimal relationship, then there are three cases as prescribed by SA. The first can be a person or any other entity that has control or significant influence over the reporting entity. Second case would be just opposite of A, that is the reporting entity exercises control or significant influence over the another entity. And third case can be another entity and reporting entity are under common control. They can be in common control with through three parts. They can have common ownership. The owners are close family members, or they have common key management. Now, as per SA who holds the responsibility for disclosure. So, of course, it is the responsibility of the management to identify and disclose the related party and related party transactions. In order to do so, they can establish systems and processes. One such example can be delegating the responsibility to audit committee. The responsibility can be to monitor the related transactions and review the areas where possible failure of identification of related party transactions can happen. Then what are the duties of auditor? So duties can be classified into four major parts. The first one can be inquiry with the management. So the auditor shall inquire the management about identity of entities related parties, then the nature of relationship with the related party, and third, whether they have entered into transaction with the related party. And if so, they have entered, then the type and purpose of those transactions. Then the second duty can be inquiry about controls. The auditor shall inquire about the internal controls adopted for identification of related party transactions. Third is more like an obligation for auditor that he has to share the relevant information often with other members of his engagement team. And the fourth one could be if he has identified some fraud risk factors, then he shall design further audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence for the assessed risk against related party transactions. SA 550 talks about auditor's responsibilities in case of related party transaction. उसने एक चीज तो बड़ा क्लियरली बोल दिया कि अगर आपका एप्लीकेबल फ्रेमवर्क कंपनी सेट हो गया, सेबेल हो गया,
तो खुद ही रिलेटेड पार्टी का बात कर रहे हो तो वहां से डेफिनेशन उठाओ। बट इस बात पे फोकस करना कि जहां पर वो ये कह रहा है कि जिस लॉ में आप ऑडिट कर रहे हो, अगर वो लॉ खुद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा है, तो भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन कौन से है। व्हाई दिस थिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप जिस लॉ में ऑडिट कर रहे हो, सोचो वो तक बात नहीं कर रहा है, बट एक ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे 550 में फिर भी डिफाइन हो रखा है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप जिस लॉ में ऑडिट कर रहे हो वहां पर डेफिनेशन नहीं है, फिर भी आपको खुद से इंक्वायर करना है कि कहाँ कहाँ रिलेटेड पार्टीज है, कहाँ का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, एंड आपको अकॉर्डिंगली अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, आइडेंटिफाई करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, और उसका जो रिस्क है उसके रिस्पॉन्स को कैसे तैयार करना है वो ऑडिट प्रोसीजर को पता है, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। एक प्रॉपर फॉर्मेट है उसका, क्या उस फॉर्मेट में चीज गिवन है कि रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, वी हैव टू राइट इट डाउन व्हाइल डिस्कसिंग विद मैनेजमेंट। जब भी आप कोई ऑडिट कंडक्ट करने जाते हो, इनिशियली सबसे पहला जो काम रहता है आपका वो मैनेजमेंट से एक बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लेने का होता है। तभी तो आप ऑडिट परफॉर्म कर पाओगे, तभी तो आपको पता चलेगा कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन इस ऑडिट पर एप्लीकेबल है जिसका हम ऑडिट करने वाले हैं। और वो कैसे पता चलेगा? बाय डिस्कसिंग विद मैनेजमेंट। आप क्या क्या डिस्कस करोगे? बहुत सारी चीज है। एक प्रॉपर फॉर्मेट कालानीन कंपनी ने उसके लिए रेडी किया है, पहले भी था, हमने इसको और ज्यादा रिफाइन किया है ऐसे 315 के अकॉर्डिंग्स में, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट बनेगा। उसमें वन ऑफ द इंक्वायरीज कि आपके रिलेटेड पार्टीज कौन कौन से हैं, एंड वन ऑफ द असेसमेंट इज कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किस एक्सटेंट तक होते हैं हमारी इस क्लाइंट पर जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं। दैट इंक्वायरी इज पार्ट ऑफ दिस असेसमेंट प्रोसेस। तो ऐसे 550 जो कि अच्छे से समझा रहा है, एक कोलैबोरेट कॉम्प्रिहेंसिव इसने स्लाइड्स बनाई है। इसमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपको आइडेंटिफाई करने हैं कैसे। अगर आपको लो बताता है तो वो हो गया, नहीं तो इसने जस्ट बताया क्या क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या जो कॉमन इन्फ्लुएंस के अंडर में आते हैं। यही चीज था उसके अंदर। आफ्टर दैट ये बता रहे कि ऑडिटर का ड्यूटीज क्या क्या होता है, ट्रांजेक्शन के केस में ऑडिटर का ड्यूटीज क्या क्या होता है आगे हम और पढ़ेंगे, बट प्राइमरी ड्यूटी क्या रहता है? असिस्ट करना कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, ये असिस्ट करना कि ट्रांजेक्शन का क्या क्या रिस्क है। बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू ऑन रिपीटेटिव मोड, दिस इज अ हाई फोकस एरिया फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, फॉर लॉ मेकर, फॉर रेगुलेटर ऑल्सो, एंड फॉर ऑडिटर ऑल्सो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैरी ऑन। Now let's begin with the written representation. This is also kind of a duty of auditor to obtain MRLs. So the auditor shall obtain MRL from management or TCWG, and it must contain information that the management has disclosed the auditor the identity of related parties and the related party transactions they were aware of, and that they have properly accounted for and disclosed such relationships and transactions in their financial statements. In addition to this, the auditor is also obliged to communicate with TCWG that all the significant matters arising during his audit in relation to related parties. Then how shall auditor report his findings? So in case the auditor encounters some transaction that was previously unidentified or undisclosed relating to related party or significant related party transactions, he shall communicate the same to management and TCWG and request them to disclose the same. But if they end up the management agrees to disclose them, he shall give unqualified report. But if they denies to do so, he shall give a modified. He shall modify his opinion as per SS 705. In case the auditor encounters some transaction of abnormal high amount and with the related party, he shall then see the relation, the contract terms, pricing, and any other information he do so. And if he finds anything suspicious or unreasonable, he shall modify his opinion as per SS 705. Then we have been studying about related party definitions. What is its importance? But what is the importance of disclosure of related parties? So these are close relationship between entity and related parties, and here there is the risk of abuse or financial fraud, as sir is also told. So they must be fully disclosed, because as an investor you want a corporate to disclose a fair and clear picture of the entity. And these related party features also been seen in recent fraud cases,
One such example of this fraud is infamous Satyam Computer Services scandal, which came into light in 2009. Now let's take a brief look at Satyam scandal. Satyam was the company founded by B. Ramalinga Raju. In this case, Raju and several top associates of the Satyam were involved in perpetrating a massive accounting fraud by inflating companies' revenue or profits. So, a significant aspect of this fraud was involvement of related parties, including Raju's family members and close associates. Now let's take a look at how related party aspect played out. So it can be classified into four major heads: bogus companies, fictitious transactions, overshaded revenue, and misappropriation of funds. So bogus companies. Raju and his accomplices created a network of fake companies owned by family members and close associates. These bogus companies were used to generate fake invoices for services supposedly rendered to Satyam. Second, fictitious transactions. Satyam would enter into contracts with these related parties for services that were actually never provided. Third, overstated revenue. By inflating revenue through fictitious transactions, Satyam's financial statements look healthier than they actually were. Fourth, misappropriation of funds. These fraudulent transactions were often used for personal enrichment of Raju and his associates, including purchasing of private properties and other assets. Uh, so these are fraudulent transactions, and the cases have prompted the importance of adequate attention to information disclosed by companies in this regard. Now let's take a look at the SEBI LODR regulations, where LODR is listing obligation and disclosure regulation. एज एन ऑडिटर जब भी आप किसी क्लाइंट को ऑडिट करने जाओ तो आप जब पहला टास्क कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी वाला दैट टाइम इंक्वायर की कौन कौन रिलेटेड पार्टीज है कैसे इंक्वायर करोगे मान के चलते कंपनीज एक्ट में ऑडिट कर रहे हो तो यू नो के रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्या है उसके सामने एक एक पॉइंट उनसे पूछिए मैनेजमेंट से हु इज रिस्पांसिबल टू आंसर योर क्वेश्चंस वो बताएगा कि हमारे डायरेक्टर्स ये है हमारे केएमपीज ये है हमारे प्रोमोटर्स ये लोग हैं तो वो एक लिस्ट होना चाहिए सो दैट जब आप ऑडिट कंडक्ट करो तो उनके साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यू कैन सी कि वेदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है कि नहीं एंड जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो इंक्वायरी में बताया हम कंप्लीटली उस पर तो ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आपको डिमांड करनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है वो आपको डिमांड करना चाहिए शेयर होल्डर ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो आपको डिमांड करना चाहिए रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो आपको डिमांड करना चाहिए रजिस्टर ऑफ केएमपीज होता है वो आपको डिमांड करना चाहिए फ्रॉम दैट यू विल गेट टू नो कि यही रिलेटेड पार्टी है अपार्ट फ्रॉम दैट आप MVP1 भी मांग सकते हो यू नो व्हाट इज MVP1 तो डायरेक्टर डिस्क्लोजर देता है कि मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ तो उसकी लिंकेज से आप ये भी समझ सकते हो कि अच्छा यहाँ पर भी इंटरेस्टेड है तो अगर उनके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो भी रिलेटेड पार्टीज है तो दिस डॉक्यूमेंटेशन शुड बी इन योर फाइल एटलीस्ट फॉर द फैक्ट कि आप लोगों ने उसको रिव्यू करा है चेक करा है तो आपकी ऑडिट फाइल में होने से वो दोनों चीजें समझ में आती है कि आपने चेक भी करा है और हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी बना है तो उसके थ्रू आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो बिकॉज आपके लिए रिलेटेड पार्टी का जानना इन द फर्स्ट प्लेस जरूरी है अंडरस्टूड So let's take a look at the SEBI LODR regulation. इसको अच्छे से पढ़ना अगर लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करना है या फिर फ्यूचर में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको किसी ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट होना है जो लिस्टेड कंपनी हो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस अपने आप में जितनी भी रेगुलेशंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और सेबी एलओडीआर के अंदर भी कुछ रेगुलेशंस ऐसी है जो इक्विटी शेयर अगर लिस्टेड है किसी कंपनी के तो उनके ऊपर एप्लीकेबल है कुछ रेगुलेशन ऐसी है जहां पर इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं बट कोई और सिक्योरिटी लिस्टेड है जिससे डिवेंचर्स वगैरह है तो उन पर एप्लीकेबल है उसमें से भी कुछ रेगुलेशन ऐसी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली है तो 17 to 27 रेगुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन होती है उसमें ही कवर आती है सेक्शन रेगुलेशन 23 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस वाली अच्छे से पढ़ना है इसको So, बाकी चीजें भी so as per regulation 21Z of this regulation 23, related party means a related party as defined under section 2 subsection 76 of Companies Act 23 as already discussed or under applicable accounting standards which we will take later on. So it also prescribes a deemed related party. So the definition consists of any party of any person or entity shall be considered deemed related party if he or she is forming a part of promoter or promoter group of listed entities. The promoter group means promoter plus relative of promoter, or he is holding equity shares of 10% or more directly or as a beneficial owner in the listed entity at any time during the previous financial year. The limit of 10% has been changed
from April 1, 2023. Earlier it was 20%. So what shall तो we? हमने पढ़ा अभी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन होती है सेबी के हिसाब से 3, जो 276 में थी पहले से, वो तो है ही, उसके अलावा सिर्फ 2 एडिशन कर, सिर्फ 2। एक जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर ग्रुप को कोई बिलोंग करता है, बस वो रिलेटेड पार्टी, ठीक है। और दूसरा किसी के पास 10% के ऊपर शेयर होल्डिंग है, वेदर रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल ओनरशिप, वो भी रिलेटेड पार्टी में काउंट हो जाए, क्योंकि कंपनीज एक्ट आपने देखा था 2 सबसेक्शन 76 डज नॉट कवर शेयर होल्डर्स एज रिलेटेड पार्टी, राइट। बट सेबी में 10% के ऊपर 20% का, जैसे इसने बोला, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इसको 10% कर दिया गया। तो अगर कोई शेयर होल्डर 10% के ऊपर शेयर होल्ड करता है किसी कंपनी में, ही इज डीम्ड रिलेटेड पार्टी। Now what shall be included under RPT? So related party transaction means a transaction involving a transfer of resources, services or obligations between first a listed entity or its subsidiary on one side and a related party of listed entity or either the subsidiary on another hand, and the second one would be a listed entity or subsidiary on one hand and any other party on another hand, but the purpose of the transaction or the motive of the transaction is to benefit a related party either of the listed entity or of the subsidiary. Now what shall be excluded under RPT? लाइक करना, ये अच्छे से समझना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन से है। थोड़ा कंफ्यूजन है ये जो लैंग्वेज, अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ। मान लो आप किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है ना, अपन उसके बाद ऑडिट ही बोल देते हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है? रिलेटेड पार्टी हमको समझ में आ गया ना, 276 वाला पहला 10% के ऊपर शेयर होल्डर है वो वाले, और प्रोमोटर ग्रुप से कोई है, उसका पार्ट है प्रोमोटर ग्रुप का, तो वो लोग। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है? आपका ऑडिट ही है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑडिट ही है, उसकी एक सब्सिडरी है, आपका एक ऑडिट ही है, उसकी एक सब्सिडरी है। वो एक ट्रांजैक्शन कर रहे किसके साथ? जो आपका ऑडिट ही है ना, उसके रिलेटेड पार्टी के साथ, और रिलेटेड पार्टी जो है उसका भी एक सब्सिडरी है। एक तरफ तो आपका ऑडिट ही है और उसका सब्सिडरी है, दूसरी तरफ आपके ऑडिट का रिलेटेड पार्टी है और उस रिलेटेड पार्टी का सब्सिडरी है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या क्या होगा? आपका ऑडिटी और या फिर आपका सब्सिडरी, अगर उस साइड से दोनों लोग हैं उनसे ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एज पर सेबी एलओडीआर, आपका ऑडिटिंग मतलब जो लिस्टेड कंपनीज का हम बात कर रहे हैं, वो लिस्टेड कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है? या तो अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, पार्टी की सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, तो दैट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इस पर एक एज पर भी अमेंडमेंट आया 1 अप्रैल 2023 के बाद में, पहले नहीं था अभी, एंड बहुत ही मीनिंगफुल अमेंडमेंट है, इंटरेस्टिंग है सुनना। आपका ऑडिटी मतलब लिस्टेड कंपनी और उसकी सब्सिडरी दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे किसके साथ? किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो भी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, अगर उस ट्रांजैक्शन में, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके रिलेटेड पार्टी या उसकी सब्सिडरी को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। एग्जांपल हो सकता है, मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है, वो अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, बट उसने अपने ट्रांजैक्शन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन रखी है कि हम आपके साथ ट्रांजैक्शन तभी करेंगे जब आप उस रिलेटेड पार्टी से परचेज करोगे। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंडीशन उन्होंने रख दिया, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बना दिया इन्होंने। तो ट्रांजैक्शन तो थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है ना, बट उस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बना दी गई है कि हम आपसे ट्रांजैक्शन तभी करेंगे जब ये वाला ट्रांजैक्शन उसके साथ करोगे। क्विड प्रो क्यू वाला चीज किया गया कि मैं आपको तभी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करूंगा आपके साथ में जब आप वो वाला ट्रांजैक्शन करोगे, एंड दैट ट्रांजैक्शन इज बेनिफिटिंग योर रिलेटेड पार्टी या उसका सब्सिडरी। तो उसको भी कवर करने के लिए इस चीज को लेकर आए। ये जनरली जो आजकल नए नए कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, जो डिजिटल मार्केटिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पेशली जो वेब सीरीज आती है या फिर जो जैसे स्पोर्ट्स वगैरह आते हैं, जियो सिनेमा पे स्पोर्ट्स वगैरह आते हैं, तो वहां पर एग्रीमेंट होते हैं कि हम ये चीज तभी वेबकास्ट करेंगे जब आप हमारे इस एंटिटी को एडवर्टाइज करोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? किसी थर्ड पार्टी के साथ में, किसी थर्ड प्रोडक्शन हाउस के साथ में। बट उस थर्ड प्रोडक्शन हाउस को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन ये भी दे दी जाती है कि आपको ये वाला ट्रांजैक्शन भी करना पड़ेगा, तब हम अपने डिजिटल राइट आपको सेल आउट करेंगे, या तब आपका जो डिजिटल प्रोडक्शन उसको अपनी
वेबसाइट पे एग्जीबिट करेंगे। तो इन सब ट्रांजेक्शन को कैच करने के लिए इस अमेंडमेंट को लेकर आया है। ट्रांजेक्शन इज विद थर्ड पार्टी बट बेनिफिटिंग द रिलेटेड पार्टी और इट्स सब्सिडियरी। इजी। Now let's study what shall be excluded under RPT. So first, the issue of specified securities on preferential basis if the company complies with the requirements under SEBI regulations 2018. And the second one could be the corporate actions, which can be payment of dividends, splitting or consolidation of securities, right issue, bonus issue, or buyback of securities. And if the company accepts some fixed deposit by a bank or NBFC, subject to the condition that the terms or the interest rate should be uniform as offered to public at large. Then करना फिर से इन इनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लॉजिक बहुत क्लियर है, बड़ा इजी है। सी अगर आरपीटी होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी लिमिट्स गिवन आगे पढ़ने को मिलेगा। अगर उसके बिलो होगा तो ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगा, उसके अबव होगा तो फिर ऑडिट रेजोल्यूशन का जरूरत है। इनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माने ही नहीं। इन ट्रांजेक्शन को आप देखोगे ना तो सब में यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन एनीवेज भी चाहिए, ओआर एनीवेज भी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहला, अगर आपको प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर इशू करना है, एसआर की जरूरत पड़ती है। दूसरा, अगर आपको डिविडेंड का डिक्लेरेशन करना है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, एजीएम रहेगा, ओआर पास होता है उसके अंदर। सब डिवीजन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सिक्योरिटीज है या राइट इशू है या फिर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है, इनमें भी रेजोल्यूशन एनीवेज भी पास कर रहे हैं। तो अलग से बुलाकर ओआर पास करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उन चीजों को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से आउट कर दिया। क्योंकि ट्रांजेक्शन किसी के भी साथ हो, जैसे रिलेटेड पार्टी के साथ हो या किसी थर्ड पार्टी के साथ में हो, रेजोल्यूशन एनीवेज भी पास हो रहे हैं। इस लॉजिक के साथ में एक्सक्लूड कर दिया गया। और लास्ट वाला एक्सेप्टेंस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आर्म्स लेंथ बेसिस वाला ट्रांजेक्शन है, इसलिए शुरू बाहर कर दिया। now let's look which transaction shall be considered material. So a transaction shall be considered material if that particular transaction along with transactions the previous transaction taken into the same empire exceeds. First, in case of normal transaction, the limit is 1,000 crores or 10% of annual consolidated turnover, whichever is less. The second limit is 5% in case of in case the transaction specifically relates to brand usage or royalty. Then is the part of the approval. So the what does so first is the approval by audit committee. So all related party transactions and subsequent material modifications shall require prior approval of audit committee of the listed entity. Now, as sir has already told that the independent director shall only approve direct party transactions, and there is a special mention of the case where if in case the listed is the subsidiary is listed entity and it is taking part in transaction with the related party and that the transaction amounts exceeds 10% of annual standalone turnover, then also the approval by audit committee would be required. Then is the omnibus approval by audit committee. As already told, omnibus approval is the blanket approval or the approval for repetitive transaction. One such example can be one-time specific purpose letter, and there are preconditions only when the audit committee can render this omnibus approval. So the first precondition is the audit committee shall be satisfied that there is some need of omnibus approval, and the approval shall be granted in the interest of the entity. Second precondition is that approval shall specify the details such as the name of the related party, nature of transaction, period, the amount of transaction, or the base price, and such other conditions that the audit committee may deem fit. Then third condition is that if there is if the aforesaid details cannot be ascertained or the transaction need is not foreseen, so then also audit committee can grant omnibus approval subject to the condition that the per transaction limit cannot exceed ₹1 crore. And then if audit committee grants the omnibus approval, they shall review the related party transactions entered into by the entity at least on the quarterly basis. And such approval, as already told, shall not be valid for more than a year. Then is the case of shareholders approval. So all material related party transactions and subsequent material modifications shall require prior approval of shareholders. And there is a case if all the related parties of the entity shall not vote to that resolution, whether related to that particular transaction being discussed or not. Then are the exceptions where where the approvals by audit committee or shareholders are not required. The first case is the transaction between two government companies. Second is the case where the transaction is taking place between holding company, its wholly owned subsidiary, or between two wholly owned subsidiaries of a holding company,
where the accounts would be consolidated later on and presented for approval before shareholders at the general meeting. And as we have समझ बना से बेलोडिया छोटा सा था, इजी था। ऑमनीबस अप्रूवल इसमें भी आया था, इसकी ऑमनीबस अप्रूवल है और कंपनीज एक्ट की जो ऑमनीबस अप्रूवल है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द थिंग कि जो ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अगर ऑडिट कमेटी कंपनीज एक्ट का बात करें 3 मेंबर होने चाहिए, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑडिट कमेटी जो सेबी के हिसाब से है 3 मेंबर होने चाहिए, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक इंटरेस्टिंग चीज और है, अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन लिस्टेड कंपनी है सेबी लगेगा, ऑडिट कमेटी अप्रूव करती है तो ऑडिट कमेटी के अंदर भी सिर्फ वही मेंबर वोट करेगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी एक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट लिस्टेड कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी को अप्रूवल का समझ में बनाना कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, रिलेटेड पार्टी समझा था हमने क्या होता है, 276 10% के ऊपर होल्डिंग वाले प्रमोटर ग्रुप। हमने ये भी समझा था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन जो मैं अपनी रिलेटेड पार्टी उसके सब्सिडरी के साथ कर रहा हूँ, एक ट्रांजेक्शन जो मैं अपनी थर्ड पार्टी के साथ कर रहा हूँ, बट बेनिफिट आरपी या फिर उसके सब्सिडरी को मिल रहा है। अब ये ट्रांजेक्शन अगर 10% ऑफ माई टर्नओवर या 1000 करोड़ था, राइट, 1000 करोड़ को भी एक्सिड कर जाता है, विच एवर इज लोअर को एक्सिड कर जाता है, तो मुझे 2 लोगों का अप्रूवल चाहिए, ऑडिट कमेटी एंड शेयर होल्डर का ओआर। इसके अंदर जो ऑडिट कमेटी है ना उसमें भी सिर्फ जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वही वोट करेंगे, बाकी लोग वोट नहीं करेंगे। ऐसा रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट में नहीं था कम से कम। और अगर वो उस लिमिट से बिलो है, लिमिट आप लोगों को पता है ना, अगर ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन का मतलब है कि ब्रांड यूसेज के लिए जो मैं रॉयल्टी पे कर रहा हूँ उसका ट्रांजेक्शन है तो 5% ऑफ द टर्नओवर है, राइट। और अगर दूसरे ट्रांजेक्शन अदर देन रॉयल्टी पेमेंट ऑफ ब्रांड यूसेज तो फिर 1000 करोड़ का लिमिट है। अगर इसके बिलो अगर मैं वो ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ओनली ऑडिट कमेटी का, उसमें भी कौन वोट करेगा, ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यही समझिए। Then let's discuss the format for disclosure as prescribed by SEBI. So first is the disclosure that SEBI requires the related party disclosure every 6 months as on the date of publication of financial results. So here's the format. First is the serial number, then details of the reporting entity, that is INTT, then are the details of the related party, its name, PAN number, and the relationship we are holding with the related party. Then is the type of related party transactions we are entering into, for example, purchase, royalty, sales, commission. Then is the value as approved by audit committee. Then is the value of transaction we are taking place during the reporting period. Then are the opening and closing balances. Then there is additional disclosure relating to related party transactions, which are applicable in case of loans, intercorporate deposits, advances, or investments made or given by a listed entity. So it is further subdivided into 2 parts. So first part is the case where the financial indebtedness, that is loans, intercorporate deposits, advances are taken to make or give loans and intercorporate deposits or advances or investments. So we will be filling this part, nature of indebtedness, cost, tenure. But in case of we are not entering into financial indebtedness to make or give loans, then we have to fill this part which mentions the nature, interest rate, tenure, whether the loan is secured or unsecured, and the purpose for utilization of funds by the end recipient. Now we have completed this part, and before continuing, let's have a quiz. Can we?
सबसे पहले फास्टेस्ट इन द फर्स्ट. Starting up with the last part of this presentation, the framework governing related party transactions also talks about accounting standards. There are two accounting standards, AS 18 and AS 24, that talk about related party disclosures. Starting up with AS 18, it introduces and prescribes the requirements for disclosures of related party relationships and transactions between the reporting enterprise and its related parties. The requirements of the standard apply to the financial statements of each reporting enterprise along with the consolidated financial statements which are presented by the holding company. Related parties. Parties are considered to be related if at any point of time during the entire reporting period, one party has the ability to either control or exercise significant influence over the other party in making of the financial or reporting decisions. Coming up to the next slide, related party issues. Why are these disclosures really necessary? Related party relationships are not prohibited. It is a normal feature of commerce and business to do transactions with any of its related parties. But there also happens to be a general presumption that the transactions which are reflected in the financial statements are happening at an arm's length basis and between the independent parties. However, this presumption may not be valid when related party relationships exist because related parties may enter into transactions which are very different from the transactions which are happening between unrelated parties. Coming up to the next slide, related party relationships are contemplated under AS 18. AS 18 deals only with the following 5 types of related party relationships, which are described in clause A to B. Starting with point A, enterprises that directly or indirectly through one or more intermediaries control or are controlled by or are under common control with the reporting enterprise. This includes holding companies, subsidiaries, and the fellow subsidiaries. Coming up to the next point 3, associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture. Coming up to the point C, individuals owning directly or indirectly an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives them either the control or significant influence over the enterprise. Here, taking the example of Mr. Robert, who happens to have the control of P Limited. In this case, Mr. Robert is a related party with P Limited. Mr. Robert, along with all of his relatives, are also related parties to the entity P Limited. Point D talks about the KMPs and the relatives of such personnel. Point E talks about the enterprises over which any person described in point C or D is able to exercise significant influence. Coming up to the next slide, who are not deemed to be related parties under AS 18. Firstly, two companies are never related parties simply because they share a common director unless this director is able to influence the mutual dealings which is happening between these companies. Secondly, if there is a single customer, supplier, franchisor, or a distributor on which the entire business of the reporting entity is dependent, then this single customer or supplier does not become the related party of the reporting entity merely because of this fact. Coming up to the next point, it talks about the providers of finance, trade unions, public utilities, and government departments when they do transactions in normal dealings with the reporting entity. They do not become the related party in such a way. Coming up to the next slide, exemption from related party disclosure in certain situations. There can be related parties, but disclosure in
the following three cases are not required to be made by the reporting enterprise in its financial statements. Firstly, when there is a conflict with the reporting enterprise's duty of confidentiality. Here, taking the example of a bank is supposed to keep the KYC data of its customers very private and confidential. In such a case, if a customer of the bank happens to be its related party, the bank is not supposed to disclose the KYC details of such a customer in its financial statements. Secondly, consolidated financial statements. Any sort of intra-group transactions between the group of members are not required to be disclosed in the CHS. Thirdly, state-controlled enterprises. No disclosure is required in the financial statements of state-controlled enterprises as regards related party relationship with other state-controlled enterprises and transactions with such enterprises. Coming up to the next slide, disclosure requirements under AS 18. If there has been any transaction between related parties during the existence of the related party relationship, the reporting enterprise should disclose the following. Firstly, the name of the related party. Secondly, the description of the relationship. Thirdly, the nature of transaction. Fourthly, the volume of transaction. Fifthly, any other elements that it considers are necessary for the users of the financial statement to know. Coming up to the sixth point, outstanding balances in respect to such related parties in its financial statement. The seventh point, talking about written off or written back balances in the financial statements in the prior period relating to these related parties. Now, coming up to the most important point, remuneration which is paid to the key managerial person should always be considered as a related party transaction, and this requires disclosure in the financial statement. However, in case there is a director who is a non-executive director, any remuneration which is paid to a non-executive director does not require any disclosure in the financial statement. Coming up to the next slide, here are a certain examples of related party transactions which are required to be disclosed. Firstly, purchase or sale of goods, purchase or sale of fixed assets, rendering or receiving of services, license agreements, transfer of research and development, leasing or hire purchase agreements, agency arrangements, and many more. Coming up to India's 24. India's 24 has the objective of ensuring that the financial statement contains all the necessary disclosures which are related to the related party transaction. Coming up to the scope of India's 24. India's 24 tries to specify to identify the related party relationship, identifying the transactions with the related parties, identifying the outstanding balances with the related parties as on the date of balance sheet, commitments with these related parties, the circumstances under which these disclosures will be made, and the amount of disclosures that will be made in the financial statements. Coming up to the next point, it also states where disclosures are not required. Firstly, when it is against the confidentiality duties of the entity, and secondly, when the entity is prohibited from making any disclosure in the statute. Types of related party relationships. India's 24 talks about two types of related party relationships. Firstly, when there is a relationship between a person and the reporting entity. Secondly, when there are related party relationships with the reporting entity and some other entity. Understanding the relationship between the reporting entity and a person. This can be understood with the help of the flowchart which has been presented towards the right. Rohit happens to be a person who is related parties with XYZ Limited because he has either control, significant influence, or he is a KMP of the XYZ Limited. Rohit, along with his close members, the close members of Rohit would also be the related parties to XYZ Limited in case the close members are children, spouse, domestic partner, brother, sister, father, or mother of Rohit, children of the person's spouse or domestic partner, dependent of that person's or of the person's spouse or domestic partner. Understanding the relationship between the reporting entity and another entity. First point, the entity and the reporting entity are the members of the same group. This can be understood with the help of the example on the next slide. Here, DT Limited is the parent and it has got three subsidiaries, X Limited, Y Limited, and Z Limited.
X Limited, Y Limited, Z Limited, along with DP Limited, they form a group. Since they are members of the same group, all these four parties are related parties to each other. Coming up to point B, one entity is an associate or joint venture of another entity, or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member. Here, Anvi Limited and Omni Limited. Anvi Limited has a joint venture, Omni Limited, along with Omkar Limited. Here, Anvi Limited and Omni Limited are related parties because of this relationship. Secondly, Anvi Limited and Mantika Limited. Mantika Limited is the associate of Anvi Limited. Because of their relationship of associate and parent, they are related parties. Coming up to the example on the right side, DP Limited happens to have three subsidiaries, X Limited, Y Limited, and Z Limited. X Limited has an associate, A Limited. A Limited will be related parties to X, Y, Z, and DP Limited as they all belong to the same group of companies. Including DP related. Who's the ultimate controlling parent. Coming up to point C, both entities are the joint ventures of the same third party. Vivid Limited has a joint venture, AK Vid Limited and BK Vid Limited. Here, AK Vid Limited and BK Vid Limited will also be related parties to each other. Coming up to point E, the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. This can be understood with the example. AK Limited has formed a separate company for the purpose of putting together the post-employment benefits of for the employees of the company. It has formed a trust for this purpose. So the trust will be a related party to the parent company AK Limited. Coming up to point F, the entity is controlled or jointly controlled by a person identified above. Coming up to the point G, a person identified above has significant influence over the entity or is a member of the KMP of the entity. Coming up to point H, an associate includes the subsidiaries of an associate and a joint venture includes the subsidiaries of a joint venture. Coming up to the point I, the entity or any member of the group of which it is a part provides KMP services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity. This can be explained with the example towards the right side. AK Limited is the parent company and it has got three subsidiaries and one associate. The associate E Limited has to have a subsidiary F Limited. F Limited provides KMP services to the ultimate parent AK Limited, which makes it a related party to all the members of the group. Coming up to the disclosures which are required under Ind AS 24. There are two categories of disclosures. Firstly, when there is a relationship between the when there is a related party relationship exists, but there are no transactions between the related parties. This is the case between parent and subsidiary. When there is a relationship of parent and subsidiary, they're always required to be disclosed in the financial statements, irrespective of whether a transaction has happened in the financial year or not. Secondly, disclosures of relationships and items only when there are related party transactions. Firstly, disclosure related to compensation or remuneration paid to KMPs, as we have seen before. Secondly, disclosure when there has been a transaction between the related parties during the financial year. Exemption to government-related entities. A reporting entity is exempt from the disclosure requirements in relation to related party transactions, outstanding balances, and commitments. When there is when the reporting entity is doing any transaction with the government company, the government entity, the reporting entity has certain exemptions in relation to disclosures. Generally, a company is required to disclose the name, the nature, the transaction, the outstanding balances, and the commitments. But in case it has entered into a transaction with the government entity, it is only required to disclose the last three things: related party transaction, outstanding balance, and the commitments which it has made with the government entity. That would all be for the presentation. Thank you for hearing us. Accounting standard 18, Ind AS 24. They exclusively talks about only disclosure requirement, nothing else.
AS18 डजंट टॉक अबाउट कि ये प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिटेड नहीं है, इसको ऐसे रेगुलेट करना है, इसको ऐसे एडमिनिस्टर करना है, नो नथिंग, ओनली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो जब भी आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करो एट द टाइम ऑफ द ऑडिट, अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है तो AS18, अदरवाइज इंडेस 24। तो आपको ये देखना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला बैलेंस शीट, पी एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, देन अदर नोट्स टू अकाउंट्स, और फिर लास्ट में अदर जो नोट्स होता है, वहां पर जनरली आपको रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर दिखेंगे। वहां पर हमको दो कैटेगरी में डिस्क्लोजर देने होते हैं। पहला, रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, और दूसरा, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं, एंड तीसरा, उनके क्लोजिंग बैलेंसेस क्या क्या है जिनके साथ ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये आप सबको पता है, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसी रिलेटेड पार्टीज जिनके साथ ट्रांजेक्शन हो या ना हो, उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है। वो आपके लिए रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर AS18, अगर किसी में आपका कंट्रोल है या किसी का कंट्रोल आप पर है, उन दोनों केसेस के अंदर आपको डिस्क्लोज करना है उन रिलेटेड पार्टीज को जिनके साथ ट्रांजेक्शन हो या नहीं हो। सी आप हर रिलेटेड पार्टी को तो डिस्क्लोज कर नहीं सकते, जिनके साथ ट्रांजेक्शन होने को तो डिस्क्लोज करोगे, वरना तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा अगर आप एक एक रिलेटेड पार्टी का नाम लिखने लग जाए, उधर ट्रांजेक्शन हो या नहीं। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजेक्शन, जस्ट वन AS18 कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर क्या क्या कवर होता है, अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी कंट्रोल माना जाता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को AS18 ने डिफाइन किया बाय 20% थ्रेशोल्ड। तो अगर आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, उसके अंदर वो कंपनी किसी के अंदर 20% या उसके ऊपर का होल्डिंग रखती है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट साइड होता है ना, असेट के अंदर, वहां देखने का कि आपके इन्वेस्टमेंट में क्या कोई ऐसी कंसर्न आ रही है जिसमें उस कंपनी का, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, 20% या उसके ऊपर स्टेक है। अगर है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर, वो आपको रिलेटेड पार्टी दिखाना पड़ेगा, वैसे ट्रांजेक्शन हो या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपनी शेयर होल्डर लिस्ट में देखो, अगर आपके शेयर होल्डिंग के अंदर कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसका 20% या उसके ऊपर होल्डिंग है, तो वो आपके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, इस पर AS18 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, उसका भी मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, ऐसे ट्रांजेक्शन हो या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, KMPs को भी आपको बताना ही बताना कि ये मेरे KMPs है। KMPs बोले तो मेरे डायरेक्टर्स कौन कौन है, एंड उनके साथ जो ट्रांजेक्शन है वो रिपोर्ट। इसके अलावा किसी ऐसे पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है जो उनके रिलेटिव हो, तो ही उसका डिस्क्लोजर आएगा विद ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में क्या क्या बताना है, ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजेक्शन, कितना अमाउंट पे किया, कितना अमाउंट रिसीव किया, या फिर ये बताना है कि मेरे P&L के अंदर उसके टूवर्ड्स कितना एक्सपेंस बुक हुआ है, या मेरे इनकम साइड में उसके टूवर्ड्स कितनी इनकम मैंने बुक कर रखी है, ये ट्रांजेक्शन में। एंड इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस, ट्रांजेक्शन तो हो गए, मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है एट कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर के फिर। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट AS18 एंड इंडियस 24 से निकल के आती है। इंडियस 24 में शायद मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से पेरेंट एंड सब्सिडरी की है, अगर उनके साथ ट्रांजेक्शन हो या नहीं हो, पेरेंट और सब्सिडरी को डिस्क्लोज करना जरूरी है। इजी। इसके अलावा लास्ट है शेड्यूल 3 में कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। शेड्यूल 3 किस किस को नहीं पता है क्या होता है, सबको पता है ना, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, मैंडेटरी फॉर्मेट है, उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, AS, इंडेस, NBFC। तो जहां पर शेड्यूल 3 का एप्लीकेबिलिटी होता है, व्हिच मींस कंपनीज, आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की कुछ चीजें और भी बतानी होती है। एग्जाम्पल, इस आप सबको पता होगा, शेयर होल्डर्स 5% के ऊपर दिखाने होते हैं। अमेंडमेंट आया अभी 2020 में, प्रोमोटर्स को भी दिखाना है, ईच एंड एवरी प्रोमोटर नीड्स टू बी डिस्क्लोज, और उनके पास कितना शेयर है वो भी डिस्क्लोजर आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमका बोरोइंग्स आती है, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन, चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे लोन है जो रिलेटेड पार्टी के साथ में अलग से डिस्क्लोज करना है। जैसे यू कैन शो लोन फ्रॉम, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, या फिर लोन फ्रॉम कंपनीज। उसके अलावा कोई रिलेटेड पार्टी के साथ में, तो यू नीड टू शो द अमाउंट इन सेपरेट हेडिंग, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। अगर ऐसा कोई लोन है जो आपके डायरेक्टर ने गारंटी की है, फुटनोट में बताना जरूरी है कि दिस मच लोन इज गारंटीड बाय डायरेक्टर। ये AS18 के अलावा दूसरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने
किसी को लोन दिया है, रिलेटेड पार्टी है, अलग से डिस्क्लोज करो। किसी में इन्वेस्टमेंट किया है, रिलेटेड पार्टी है, अलग से डिस्क्लोज करो। ट्रेड रिसीवेबल में आपकी वो रिलेटेड पार्टी है, अलग से डिस्क्लोजर जाएगा, दिस पर्सन इज माय रिलेटेड पार्टी जिससे मेरा इतना मच अमाउंट इज रिसीवेबल विथ रिलेशनशिप ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सिंपल सा डिस्क्लोज कर दिया ये रिलेटेड पार्टी है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो रिलेटेड पार्टी है, दैट नीड टू बी डिस्क्लोज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका टाइटल डीड आपके पास नहीं है, आपको ऐसे डिस्क्लोज करना पड़ता पूरा टेबल में, उसमें एक कॉलम होता है, अगर रिलेटेड पार्टी के पास उसका ओनरशिप है, यू नीड टू डिस्क्लोज दैट। प्रोमोटर को, केएमपी को, डायरेक्टर को, रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है, यू नीड टू डिस्क्लोज। इसके अलावा अगर मान लो आपने किसी रिलेटेड पार्टी का डेबिट बैलेंस, रिसीवेबल राइट ऑफ किया है, यू नीड टू डिस्क्लोज एज वेल एज सेक्शन 180 जो पब्लिक कंपनीज पे लगता है। वहां पर अगर किसी भी डायरेक्टर का या उससे रिलेटेड पार्टी का आप डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करते हो, वेवर दे रहे हो, उसको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत आता है, एंड यू नीड टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेट। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी आते हैं। ये सब चीज है, ये सब कंपाइलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पीपल नीड टू नो, so that while performing an audit you can see कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, क्या क्या चीजें नहीं आ रही है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एंड क्या क्या कंप्लायंसेस एंड नॉन कंप्लायंसेस उन लोगों ने करी है जो आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्वालिफाई होने के वर्ष का फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है। पीपल हैव टू नो। ठीक है, दिस टाइम